Good morning, everyone. Welcome to TSN English class, chapter number 5, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. And we are on the second part of this chapter, that is here. One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its numbers one of its members, Mr. L. K. Jha, the first branded report raised the question: are we to leave our successors or scorched of planet of advancing deserts, impoverished landscape, and ailing environment? Here, in these lines, the author is talking about one of the early international commissions. जो भारत की स्टार्टिंग के इंटरनेशनल कमीशंस हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट दोज कमीशन which dealt which dealt means which relate with inter alia, हमारी दूसरी चीज़ों से रिलेट करते हैं with the question of ecology, and the question is all about our ecological system and the environment was the Brandt Commission. और ये जो ब्रांड आयोग है कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिनमें से जो इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं विच आर वेरी वेल नोन एंड फेमस, एंड दोज आर द मेंबर्स ऑफ दिस ब्रांड कमीशन. And the Indian member is Mr. L. K. Jha. The first branded report raised the question, and in the first report of this brand commission, there is a question, that is, are we to leave our successors? क्या क्या हमने अपने सक्सेसर्स के लिए एक ऐसा ग्रह या एक ऐसा प्लैनेट, स्कॉच्ड प्लैनेट मीन्स द प्लैनेट विच इज़ डेट्रियोटेड और डिप्लीटेड प्लैनेट, या पूरा एक झुलसा हुआ ग्रह हम उनके लिए छोड़ना चाहते हैं. एडवांसिंग डेजर्ट्स, क्या हम उनके लिए रेगिस्तानों को बढ़ा रहे हैं? एडवांसिंग मीन्स वी आर इंक्रीजिंग डेजर्ट्स फॉर देम. एंड इम्पवरिश्ड लैंडस्केप्स, साथ ही साथ हम उनके लिए इम्पवरिश्ड मीन्स ऐसे लैंडस्केप्स छोड़ के जा रहे हैं. दोज लैंडस्केप्स आर एक्चुअली बैरन लैंडस्केप्स, जिन्हें हम कह सकते हैं. इस तरीके के लैंडस्केप्स हम उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं. एन एलिंग एनवायरनमेंट, एंड द एनवायरनमेंट विच इज़ फुल ऑफ डिजीजेस, और ऐसा बीमार एनवायरनमेंट छोड़कर जाए. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज thoughtful book, The Global Economic Prospects, point out that the Earth principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global. In these lines, Mr. Lester Brown अपनी एक book, that is thoughtful book, in which his thoughts are written over there in that book, The Global Economical Prospect, and the book name is Global Economical Prospect, point out, and in this book he points out that the earth principle biological system, जो अर्थ के प्रिंसिपल्स हैं, जो अर्थ की कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, biological systems are four. Here he is talking about the biological system, the four main biological systems of the earth, and those are the fisheries, मछलियों वाले क्षेत्र, फॉरेस्ट, और जो हमारे वन विभाग हैं उनके बारे में, ग्रासलैंड्स, हमारे जो चारागाह हैं उनके बारे में, द लास्ट वन इज क्रॉप लैंड वेयर वी ग्रो आर क्रॉप, दैट एज आर एग्रीकल्चर लैंड्स. तो द फोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर देयर एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोब. एंड विद दीज four biological systems, where the foundation of our globe is. So these are the foundation of our globe. Economical system, and these form the economic system. In addition to
supplying our food, these four systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics. वो here writer is talking about that these four economic system, they are the base, the foundation base. The foundation means the base of our ecological system, and they supply the basic things or the basic raw materials for our most of the industries, that are they are providing raw material for an industries except the mineral and the petroleum, because mineral and petroleum, they are derived from the synthetic. In large areas of the world, human claim on these systems are reaching an unsustainable level, a point where there is productivity is being impaired. When this happens, fishery collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and crops land deteriorate. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what go inside it, since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. Several species of life face extinction as a result of its destruction. Here, in these lines, he is talking about, the writer is talking about that these four things, the earth is based on these four things, except petrol and minerals, because petrol and minerals are some synthetic things. In large areas of the world, और इन द जो अर्थ के बड़े बड़े हिस्से हैं, humans claim on these system are reaching an unsustainable level, and for the large area and the areas where the population of the humans is more, उधर अनसस्टेनेबल लेवल, असामान्य स्तर पर पहुंच चुका है, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बिंग इम्पेयर्ड, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर जो प्रोडक्टिविटी है, दैट इज the stage of productivity is in bad condition. When this happens, fishery collapse, and when this happen, जो fishery areas हैं, they collapse, they destroy completely. Forests disappear. But by the time the forests are disappear, forests जो है वो धीरे धीरे vanish होने लग जाएंगे, disappear होने लग जाएंगे, because of the use or because of the misuse. The grasslands are converted into barren lands, और जो grasslands हैं, चारागाह हैं, they are converted into barren, बंजर ज़मीन में बदल जाएंगे, and croplands deteriorate, और जो croplands हैं वो पूरी तरह उनकी जो condition है that became worse. In a protein conscious and protein hungry world, the world is having hunger for what? Protein, and the world is conscious about the protein intake. Everybody is conscious about that. They are overfishing in common every day. In previous years, the fishing is done every day, but now people are doing overfishing because they want to eat too much protein for their body. In poor countries, local forests are being decimated, and in poor countries, जो local forest हैं, they are destroyed completely in order to procure firewood for cooking, because people want firewood. People want firewood for what purpose? Cooking purpose. In some places, firewood has become so expensive. कुछ जगहों पर firewood is that much expensive, which is expensive as much as their food is cost less and the wood is cost more. So this is the condition, and the cost of the food is less, and the cost of the food is firewood is more than the food. What goes under pot now cost more than what goes inside it. जो pot के अंदर है, जो पकाया जा रहा है, that is of less cost,
और जो पॉट जिससे पॉट जो है वो पक रहा है, दैट इज़ मोर इन कॉस्ट. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution. So Dr. Myers is saying that जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, दीज आर द पावर हाउस ऑफ आर, हमारे जो जैविक विकास है उसके पावर हाउस कहलाते हैं दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, एंड सो मेनी स्पीशीज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, लुप्त हो गई हैं, बिकॉज they are facing this destruction of the forest. It has been well said that the forest precede mankind, deserts follow. The world ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year, and growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. The World Bank estimate that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. And it has been well said बाय फॉरेस्ट प्रिसीडी मैनकाइंड. यहाँ पर कहा, बिल्कुल सही कहा गया है कि आफ्टर मैनकाइंड, मैनकाइंड विल ऑल रिमेन, द फॉरेस्ट विल रिमेन, द डेजर्ट्स विल रिमेन. जो मैनकाइंड है वो फॉरेस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगी, एंड आफ्टर दैट ओनली वन थिंग विल रिमेन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज डेजर्ट्स. The world ancient पेट्रोनोमी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग. और वर्ल्ड की जो एंशंट फॉरेस्ट पेट्रोनोमी है, जो हमारी प्राचीन पेट्रोनोमीज विरासत है, जो कि 40 to 50 मिलियन एकर्स की है, दैट इज ऑल्सो इरोडिंग. वो भी अब घटती जा रही है. And the growing use of dung, and people are using cow dungs or the dungs of buffaloes for burning, and for cooking their food, deprives the soil of an important natural fertilizer. And by doing this, by burning those dungs of cow and buffaloes, people are depriving our planet earth with the natural fertilizers, because the dung of cows and buffaloes is the most important natural fertilizer on earth. The World Bank estimate that a five-fold increase in rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. And here he is talking about, according to World Bank, it is estimated, उन्होंने अनुमान लगाया है, that if we want to plant a forest, तब हमें 5 गुना तेज़ी से हमें फॉरेस्ट लगाने होंगे या पेड़ लगाने होंगे. प्लांटिंग इज़ नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड, ताकि हम इस ये जो सिचुएशन है वेयर द फ्यूल वुड इज़ डिमांडेड बाय द ह्यूमंस, इस सिचुएशन से कोप अप कर सके, बाहर निकल सके इन द ईयर 2000. जेम्स स्पेथ, the president of World Resources Institute, said the other day, we are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स स्पेथ, जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही सेड अदर डे, कुछ दिनों पहले कहा था, वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट, हम ऐसा कह रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को खो रहे हैं. एवरी सेकेंड हम एक एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं, बट दिस रेट इज़ मोर देन वी आर सेइंग. जो फॉरेस्ट रेट है वो जो है वो, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड. हम हर सेकेंड में नहीं बल्कि हाफ सेकेंड में एक एकड़ लैंड जो है उसे खो रहे हैं. दैट मीन्स दैट द बायोलॉजिकल सिस्टम of the earth, the actual loss of forest may be 8 times the government statistics. The environmental conditions in 88 countries is very critical. And though rules exist for the preservation of our environment in India, the laws are constantly floated.